Hi everyone, I'm Kashish and welcome back to Coding Ninja's YouTube channel. Today we'll be solving the 25th weekly contest. The link is mentioned in the comments. Let's start with the first question. I hope my screen is visible and I'm properly audible. So the first question is Ninja and the string operations. The question states Ninja has been given n strings containing lowercase English alphabets represented by an array S. In one operation, Ninja can remove any character from any string and will insert it at any position in any string, possibly in the same string. Now, Ninja wonders whether it is possible to make all the strings equal. Your task is to help Ninja find whether it is possible to make all the strings equal with some finite number of operations. Return 1 if it is possible, otherwise, return 0. Alright, so let's see an example. A, B, B, and CCA. It is possible because we can simply take 1B and insert it here, remove 1C, insert it here, and remove 1C and insert it at the end because we can insert it at any index. So these two are equal, hence we can return 1. So the major observation in this question is, let me share the other screen. So as we saw, if so the given were A, B, B, C, C, and D, and we want to make them equal, and one possible solution of making them equal is ABC and ABC. So the major observation in this has to be, let's say we um, so here n is equal to 2, we have two strings. Now if we want to make them equal, every letter should be present in every string. So some letter, let's say X, to be present in all n strings, its frequency must be a multiple of n. So that, let's say if the multiple is 1, if f is equal to n, so it will occur one time in every string. And if it is the multiple is 2, then it will occur twice. So basically what we have to do is count frequency of all elements and then check if every frequency is a multiple of n, and we can check that by doing modulo. And if so, that means we can in some finite way rearrange it to make all the strings equal. So let's try coding this. If you all have any queries in between, do let me know. So as we discussed, we can make a frequency array, initialize it by 0, then iterate over the given vector, and then over the string. So string current is set I. So we have stored all the frequencies. Now we just have to see if all of them are multiples of n. So not equal to 0. That means it is not possible to rearrange. So we simply return 0. Otherwise return 1.
So this pass, let's try the second question. I hope you all understood the first question. So the second question is smaller elements. Ninja has an integer array P of size n. If he wants to find the number of indices I such that for all indices j that are less than I, the element is I, the element at I is less than equal to element at j holds true. So let me just write this example 42513. And we want to find the count of i's such that for all j less than I, p at I is less than equal to p at j. Let me- So the brute force approach obviously can be you take two loops, run I and run j. J's condition will be that j is less than 0. Let me properly write this. I equals 0. I is less than n. I plus plus. So for all indices, we will see if there exist all j is less than I and j plus plus, and we'll see if p at I is less than equal to p at j. We can directly see greater than. If this is greater than, then we can have a flag equals 1 and break. Coming out of the loop, we'll check if flag equals 0, that is we couldn't find any element that violates the given condition. If so, then we'll simply do answer plus plus, and in the end we'll return answer. Obviously this is an n square approach, but if we have a closer look, we'll see we are able to optimize this properly. So let's see for the given example itself. First we'll start with here. Our I is at 4. There is no element to the left of I, and so there is no j, and hence this is the smallest element present currently. So possible solutions for I are 0. Then we'll increment our pointer here. Then we'll check for all the elements to the left of 2. So so our current j will be pointing to 4. Now 2 is less than equal to 4, correct, and there is no other element to be compared with. So I equals 1 is also a valid solution. We'll move our pointer to 5. We'll check for all elements to the left of 5. Is there any element? So 4. So our current I is 5. I points to 5 and j points to 4. Now we'll see 5 is not less than equal to 4, so it is initially violated itself. So I is equal to 2 is not a valid solution. What we saw is if we encounter any element which is smaller than the current element, we will not be able to take that particular index, which also suggests if you find an element that is smallest, so you won't have any element to the left of it that will violate this particular property. So we will take all i's such that the element at I for that particular point is the smallest. So what we can do is basically we understood we want to find the smallest element where our I is. So let's check this property if it holds true for this array. When I is here, this is the current smallest, let's say minimum is 4. So this holds true. So our answer variable will be incremented to 1. Then we'll move forward to 2, and then we'll compare our 2 with 4. And for this particular part,
2 is the smallest. So where we are is the smallest element. So we'll increment this to 2 and we'll replace it by 2. We'll move forward and now our eye points to 5, but 5 is greater than 2. So we know this property will be violated by 2 itself. So the minimum element that was present to the left of the current element. So we'll simply increment our pointer. Now we'll see the element at current pointer is the smallest. So we'll first replace the minimum and increment the answer. Now when we come at 3, we know it is not the smallest element. Hence, the smallest element itself will violate this property. So we have to increment our I. And the array is already traversed. So we'll return our answer 3. Let's try coding this. I hope this approach was cleared. So first, let's code the brute force approach. Then we'll move on to the optimized approach. We initialize our answer as 0. Then for n time equal to 0, I is less than n, I plus p. We have a flag 0 indicating there is nothing violating the property as of now. Less than n plus which is less than I because we have to see for all the elements to the left of I. Then we state the property if p at I is greater than p at j, that means we found something that violates the property. So flag equals 1 and break. Now we'll check if flag equal 0, that is nothing was able to cause the loop to break. If so, then we'll increment our answer and simply return answer. So this passed. Let's try submitting this. This causes TLE. So yes. If there are any queries, do let me know, please. So let's try the optimized approach. So we have to initialize a min. Then we'll iterate over the whole array. We'll check if the current element is smaller to our min. Less than equal to will work here because if 4 and 4 are present, it will work. So our current element is less than equal to min. We'll first update the min and then increment our answer that this particular index is a valid answer to be considered. Then we'll simply return answer. This pass. Let's try submitting this. Okay, so this was submitted. So Prathamesh, the contest link is present in the comments. You can go through it. And this was the second question that I explained, smaller elements. I didn't get you. Is this good job opportunity to learn coding? So let's move on to the third question. If you all have any doubts related to the first two questions, please let me know in the comments. So the third question is beautiful, perfect tree. Ninja loves trees. He calls a tree
Perfect if all the nodes on the left of the tree are strictly smaller than the node itself. Similarly, all nodes on the right subtree are strictly larger than the node. So this is basically a BST. One day Ninja comes across a problem. He accidentally changed the position of some nodes in his perfect tree. So we had a BST and he swapped some nodes, and even some nodes values are changed. Now he wants to refix his tree to be a perfect tree again. We have to make it a BST again, but he can swap any two nodes. So by we have to make it a BST by swapping only two nodes. Can you tell if you can retrieve a perfect tree by swapping any nodes, any two nodes only once? Okay. So this is a given tree. Here it is smaller, smaller here. Okay. This is input is like this. Okay. So case one tree looks like this. Fine. So we know it is a BST and we know that some nodes are swapped, and then we have to tell if we can make it a BST again by swapping only two nodes. So we have a BST with left has to be less and right has to be greater than the node. They cannot be equal. Other than that, we know some nodes are swapped, so some can be 0 if it will not be 1, it will be 2 or more than 2 basically. If 0 nodes are swapped, we have to return 1. If 2 nodes are swapped, we have to return 1 because we have only one operation to swap the 2 nodes again, and we'll do that, so it will become a BST. If more than 2 nodes are swapped, we cannot convert it back to a BST because we are told that we can swap the 2 nodes only once. Okay. So we know that there exists a standard problem in which we are told that 0 or 2 nodes are swapped and we have to refix the tree. But here we are told that any number of nodes can be swapped. So we cannot use that particular optimized algorithm, but there is an, we don't call it brute force, but yes, there is an approach that leads to that approach that can be used here. So the observation is the in order traversal of a BST is in sorted order. So this is the observation that we have to build a solution on. So what we can do is, mm, so if no nodes are swapped, first we know the first thing is we have to store the in order traversal in a vector. Then we have to check, then we have to iterate and see if it is sorted. If so, we return 1. Or we what we can do is we can keep a count of the nodes that are misplaced. And how can we do that? We can take another vector and call it S, which we will sort manually, and then we can check if these two are equal. For all n, we'll check if in order at I, if it is equal to sorted order at I, then no issues. If not so, we can keep a count of misplaced. And if misplaced is 2, we can return 1. And if it is greater than 2, we'll return 0. Basically, if misplaced is less than 2, because we have to cater to 0 as well. Also, because we have strict less than, we also have to see if there exists equal node. So we also base case, or we have to check another thing if there are equal nodes present. In this case also we have to return 0. So let's try coding this. So first step was store in order traversal.
So we can create a vector int and call it in, and also we can create, then we also need a sorted vector to compare the in order one. So vector int s, and to store these we'll call a function in order to which we'll pass a root in and s. So let's create this first. Void in order node and star root vector and in, and I hope you all understand why I took these two vectors by reference here, and if not, please let me know in the comments. I'll explain why we particularly need to take these through reference itself. So as usual, we'll first check if root is null. If so, then return. In order के लिए we first go to left, then we process the current node, and then we go to right. So in order root left, we pass the same parameters, and here what we do is in dot pushback roots data. Similarly, s dot pushback roots data. We could have either passed this here and taken the elements at the same time as in, या फिर हम क्या कर सकते थे, हम इनमें सारी चीजें स्टोर करवा के फिर यहाँ पे एक लूप लगा सकते थे जिसमें हम सारी चीजें इसमें कॉपी करते. So both are the same thing. Then we call write. So root write in and s. So this will basically populate our in order and s. Then second step is sort s. So sort s dot begin, s dot end. So this will give us the sorted order of s. यहाँ तक समझ में आया होगा, I hope. हाँ, trees are pretty important. So after sorting, we have to check for equals. Check for equal elements. So for, let's save the size somewhere, s dot size. Then we'll iterate for int I equals 0, I is less than n minus 1, I plus plus. If s at I equals s at I plus 1. मैंने n minus 1 इसीलिए लिया because हम एक एलिमेंट आगे के साथ चेक कर रहे हैं. So if I keep it at n, यहाँ हो जाएगा n minus 1 plus 1 n, and n पे कुछ नहीं होता है. So it will give us runtime error. So if these are equals, we can simply return 0, क्योंकि equal elements are not allowed according to this question. Now we have to keep misplaced equals 0 for int I equals 0, I is less than n, I plus plus. We'll see if s at I is not equal to in order at I. अगर ये दोनों equal नहीं है, means something that should have been at this position is at some other position. So misplaced plus plus. Now if misplaced elements का count is less than equal to 2, we return 1, otherwise we return 0. Let's try if this works. Fine to submit. I hope ये question भी समझ में आया होगा properly. The first three questions were pretty easy, I'd say. Last question देखते हैं. Ninja is planning to do some projects during his summer vacation. There are n number of projects divided into three groups. So we have a variable n and we have groups as three. Each project has two parameters, t at I, meaning the days required to complete the project.
So we have a time limit for every project and GATI representing the group to which it belongs. Now the summer vacation will last for D days and Ninja has to choose the projects so that the sum of number of days required to complete the projects is exactly D. So basically it means कि हमारे पास कुछ प्रोजेक्ट्स होंगे मतलब n प्रोजेक्ट्स हैं उनमें से हम कोई भी रैंडमली प्रोजेक्ट्स चूज कर सकते हैं जिनके साथ हमें पता होगा कि एक टी टाइम एसोसिएटेड है अगर जो हमने प्रोजेक्ट्स चूज किए हैं the sum of the days required to complete the project is exactly D तो वो जो सबसेट होगा let's call it a subset itself तो वो सबसेट की जो t की वैल्यू होगी adding all those must give us so sum of t should be equal to d. That is what the question requires us. But there are two conditions. वरना ये तो subset sum problem हो जाता directly. So Ninja will do each project only once. हाँ ठीक है हम एक प्रोजेक्ट को एक ही बार चूज कर सकते हैं एक से ज्यादा बार चूज नहीं कर सकते. And then Ninja will not do projects from the same group successively. That is, no two adjacent projects can belong to the same group. So what this condition means is, let's say there is a project at index I, which has some time limit, let's say 3, and the group it belongs to is 1. And there is I plus 1 that we are going to choose for our current subset, जिसकी वैल्यू है 4 लेकिन वो भी फर्स्ट ग्रुप को बिलोंग करता है तो यहाँ पे ये कंडीशन वायलेट हो जाएगी कि 1 और 1 है तो हम इनको साथ में चूज नहीं कर सकते वी हैव टू चूज समथिंग फ्रॉम ग्रुप 0 or group 2 we cannot use same group for the next element that we choose. Now Ninja is thinking about the number of ways in which he can select the projects. Their order matters. Obviously their order matters. ठीक है. Such that the sum of the time required to complete the project is exactly D. So basically हमें सिर्फ एक सबसेट नहीं ढूंढना है हमें all possible subsets ढूंढने हैं जिनका sum will be equal to D. Fine. And there are no two adjacent projects from the same group, and each project is chosen at most once. ठीक है तो हम एक ही सबसेट में नहीं एक ही सबसेट में नहीं टोटल आंसर्स में एक चीज को एक ही बार सिलेक्ट कर सकते हैं मतलब जो हम प्रोजेक्ट्स बनाएंगे इट्स नॉट लाइक लेट्स से वी हैव 4 प्रोजेक्ट्स with the indices 0 1 2 3 तो आर आंसर कैन नॉट बी लेट्स से हमने 1 2 भी ले लिया और दूसरा इज 1 3 भी ले लिया दैट विल वायलेट कि बस एक ही बार हम 1 चूज कर सकते हैं. Since Ninja is busy preparing for the projects, you can help find the number of possible ways for him. Since the answer can be very large, output answer as modulus. ठीक है, so we have to define him. ठीक है. किसी को क्वेश्चन समझने में डाउट है क्या अभी? अदरवाइज आई स्टार्ट एक्सप्लेनिंग कि हम इसे कैसे अप्रोच कर सकते हैं बेस्ड ऑन द गिवन इनपुट्स. ठीक है. सो सो वी हैव एन एरे जिसमें हमें बोला गया है कि एवरी इंडेक्स कैन बी यूज्ड एट मोस्ट वंस. ठीक है. एंड वी हैव टू मेक सबसेट्स फ्रॉम दिस एरे by taking index at most once such that sum of elements of this particular subset is equal to D, which is a given parameter in the question. And also हमें एक और array दिया हुआ है G और कंडीशन क्या है जब हम सबसेट बना रहे होंगे तो हमें इस G का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि if you are taking
let's say index I जिसका group is 0, you cannot take just immediately after I any other index जिसका group भी 0 होगा. So I hope question समझ में आया होगा ठीक से. So now what is the first observation is we have to find हमें number of ways ढूंढने हैं. That means we need all possible solutions. And all possible solution means recursion. मतलब हमें सारे सॉल्यूशंस को पहले ढूंढना पड़ेगा. देन वील सी कि हाँ ये यूज कर सकते हैं या नहीं. सो दैट इज फर्स्ट ऑब्जर्वेशन. अदर देन दैट अब हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है, मतलब रिकर्जन, मेमोराइजेशन, डीपी. पहले मेमोराइजेशन से ट्राई करते हैं. तो हमारे पास क्या क्या पैरामीटर्स है टू डिसाइड कि कितने डायमेंशन का डीपी बनाएंगे हम. अब हाँ, वन अदर थिंग इज वी नीड सबसेट्स. सो सबसेट्स इज समथिंग जो डायरेक्टली पॉइंट्स टू द बेसिक यूज ऑफ बिट मास्किंग. मतलब यहाँ पे इट्स लाइक यू कैन यूज बिट मास्किंग या यू कैन यूज अनदर, लेट्स से, array of size 2 raised to n, make it a boolean array and then उसमें store 1 0 indicating ये वाला इंडेक्स हम यूज कर चुके हैं या ये नहीं यूज कर चुके हैं. सो लेट्स से कि हम इसे बिट मास्किंग से ही करते हैं. हम इसका कंस्ट्रेंट्स देख लेते हैं कि कंस्ट्रेंट्स क्या है. सो n इज 15, 2 raised to 15. हाँ ठीक है. सो मतलब इसका सबसे बेसिक यूज है बिट मास्किंग का सबसेट से, तो लेट्स गो विद बिट मास्किंग ओनली. ठीक है. तो एक हो जाएगा, हमें एक ये चीज ध्यान रखनी है. उसके बाद इसका क्या पर्टिकुलर सम है ये ध्यान रखना है. और ये वाले कंडीशन पे ध्यान देना है. सो लेट्स से वी जी, हाँ, denoting group, S denoting sum, B denoting bit masking. So we'll have a 3D DP. ठीक है. So what next? अभी हम क्या करेंगे बिट मास्किंग में. क्या होगा, लेट्स से कि हमारे पास एक एरे है ऑफ साइज 4, 1 0 और हमने इसमें से कुछ कुछ एलिमेंट सिलेक्ट कर लिए फॉर अ करंट सबसेट. सो ये दोनों अगर हमने सिलेक्ट किए तो दिस विल बेसिकली गिव अस 2 raised to 0 plus 2 raised to 2, 1 plus 4 5. सो यहाँ पे हम 5 स्टोर करेंगे. उस टाइम पे I'm just telling you what variables we'll be using and then s will be कि हाँ सम क्या है. तो इस पे अगर लेट्स से 4 है, इस पे 7 है, तो यहाँ पे होगा 11. एंड जी विल डिनोट कि हमने जो लेटेस्ट एलिमेंट चूज किया. जैसे हमने पहले 4 चूज किया, फिर 2 चूज किया एंड 2 का ग्रुप है 0. सो वील से यहाँ पे 0 आएगा. सो दैट व्हेन वी आर चूजिंग द नेक्स्ट एलिमेंट वील कंपेयर इट विद दिस. ठीक है. सो लेट्स ट्राई कोडिंग एंड उसी में वील सी इफ देयर आर एनी बेस केसेस और सो. मेमोराइजेशन कोडिंग करते हुए बेटर समझ आ जाता है. तो हमें एक डीपी बनाना है जो हमें मेमोराइजेशन यूज करे. बेसिकली तो एक ग्लोबल डीपी बना लेते हैं. It will be a 3D one. So vector int dp. और हमने यहाँ पे लिखा हुआ है कि we have to define an m. So int m equals power of 10, 9 plus 7. ठीक है. अब हमें यहाँ पे हमारा डीपी हर बार इनिशियलाइज करना पड़ेगा. सो डीपी इक्वल्स हम साइज के साथ इनिशियलाइज कर देते हैं. तो मैक्सिमम क्या साइज हो सकता है सबसे पहले. सो इट विल हैव b कॉमा s कॉमा g. ठीक है. तो
या तो हम, हाँ, वन एंड द सेम थिंग, so it will be vector vector. हम इसे, पहले इसको 15 है तो मैक्सिमम साइज हम इसको देंगे 2 raised to 15। इसको पहले जी ले देते हैं एंड देन एस। तो जी क्या होगा हमारे यहाँ पे, कितने ग्रुप्स हैं, तो वी हैव 3 ग्रुप्स एंड देन सम कैन बी मैक्सिमम डी, तो D+1। ठीक है, और हम इनिशियलाइज, अगर हम मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं तो एवरीथिंग हैज टू बी इनिशियलाइज्ड बाय -1। आई होप इतना समझ में आ रहा है अब तक। तो सो ये वाला ऑपरेटर तो पता ही होगा, दिस मीन्स 2 raised to 1 and then power 15, so 2 raised to 15 effectively। ठीक है, तो पहले ये इनिशियलाइजेशन हो गया एंड देन अभी हमें क्या क्या लगेंगे दूसरे वाले हेल्पर फंक्शन में, int b equals 0, b denotes bit masking, and then we'll call a helper function। so let's directly return int helper। हेल्पर को डीपी पास करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, डीपी इज ग्लोबल, so we'll pass it n comma d comma t comma g, and also we have to keep um, count of bit masking and then the group। let's say हमने यहाँ पे 4 लिया है टू डिनोट कि 0 1 2 तो है ही, 3 मीन्स कि कुछ नहीं, हम उसको -1 से भी कर सकते हैं, बट सिंस हम सब कुछ +1 लेके चल रहे हैं तो लेट्स डिनोट दैट इटसेल्फ। ठीक है, एंड द करंट सम, बिकॉज हमने कुछ भी चूज नहीं किया है, इज 0। so let's make a helper function, it has to return int itself, int helper, copy paste कर लो। after that we are using int b, then int group and int sum। ठीक है, तो फर्स्ट वील सी, अगर जहाँ हम हैं करंटली, इफ द सम इक्वल्स डी, तो वी हैव फाउंड अ प्रॉपर सबसेट, so we can return 1। if not, then let's say int, अच्छा हम मेमोराइजेशन यूज कर रहे हैं तो देयर इज ऑलवेज अ कंडीशन कि अगर हम int dp तो भी, हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो दिस कैन नॉट बी रेफरेंस, एंड ग्रुप एंड सम। इफ वी, इट इज नॉट -1, हमने यहाँ पे -1 से इनिशियलाइज किया हुआ है, इफ दिस इज नॉट -1 दैट मीन्स हम यहाँ ऑलरेडी आ चुके हैं, सो रिटर्न द सेम थिंग। नाउ दीज वर द 2 बेस केसेस, आई थिंक और कुछ बेस केस तो नहीं होगा ऐसे। ठीक है, तो वी इनिशियलाइज्ड आवर आंसर, नाउ we will check for all elements check करते हुए we will see if group of current element equals something that we already chose। यहाँ पे 3 काम आएगा क्योंकि 0 1 2 ही हो सकती है ग्रुप की वैल्यू एज गिवन। सो फॉर द फर्स्ट टाइम वो 3 के इक्वल कुछ नहीं होगा, यहाँ पे हम -1 भी पास कर सकते थे, बट ठीक है। सो इफ दिस इज इक्वल, सो वी कैन नॉट कंसिडर दिस फॉर द करंट आंसर। ठीक है, तो हम कंटिन्यू कर देंगे। अदरवाइज व्हाट वी कैन डू इज वी विल चेक
if we can take this particular element, so for the condition will be agar this and the sum that we already have is less than equal to d, that means हाँ हम इसे consider कर सकते हैं. So then what we'll do is we will check if the current index is included anywhere else. For that we will, let's just do, हमारे पास int I तो है ही, तो let's just store this somewhere and then check if bit mask and index, if um this is equal 0. Now what does this mean? If this is equal 0, that means let me share my other screen या फिर यहीं बता देती हूँ. ठीक है, तो क्या होगा कि जो हमारा बिट मास्किंग का नंबर है, जैसे हमने देखा था 5, दूसरे स्क्रीन पे ही बताती हूँ. So let's say b is 5, which means it's something like this. और हम कोई एक इंडेक्स पे हैं, लेट्स से कौन सा हो गया, 0 1 2 3. ठीक है, तो हम हैं इंडेक्स लेट्स से 0 पे. तो इफ वी डू दिस एंड 0, तो इट विल ऑब्वियसली गिव अस 0. 0 तो देगा ही वो. 2 raised to, let's take some other example. So we take this as 1. So this and 1 will mean this. So this will give me 0 0 and 0, क्योंकि ये यहाँ पे था ही नहीं. अब this means कि हमने उसको यूज नहीं किया है अब तक. So that means we can take this into consideration for our current answer. So if this comes out to be 0, that means हाँ हम इसे consider कर सकते हैं, इसको हमने अब तक यूज नहीं किया है. तो सबसे पहली बात will be कि इसको mark as used. So this will be B और और से वो वाली bit set हो जाएगी. So after setting this bit, we will do वही अपना normal recursive call. So answer plus equals, we will call helper n d t g and we'll pass b as same. Group will be जो हमारा current index का group है. So g at I and then sum will be sum plus t at I because we are considering that. ठीक है, so ये हो गया. अब next step should be कि what if this doesn't give us any proper answer, so we'll reset the bit. So to check if it is not used, we use and. To set the bit we use or, and to unset or basically reset we use XOR, क्योंकि 1 1 होगा तो 1 1 का 0. And then we'll simply return answer. हमने डीपी में भी स्टोर करना है. सो डीपी एट क्या क्या लेके चल रहे हैं, बी G and S equals answer and return the answer. Let's see. Power was not declared. अच्छा हमने M तो कहीं यूज ही नहीं किया है. सो हमें आंसर के साथ यूज करना है वो. सो इट विल बी आंसर mod M plus helper mod M, the whole mod M. So no, this
क्या गलत किया इसमें? dp at this is not equal to 1. Comparison error, no matching operand for traits vector. इसको इनिशियलाइज करने में कहीं कुछ इशू हुआ है क्या? दिस इज द फोर्थ क्वेश्चन. सो इट्स वेक्टर 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 डीपी. हम कौन को ऊपर से वेक्टर में तो इशू नहीं आ रहा. ठीक है, हमने यहाँ पे ये चेक कर लिया. हमने यहाँ पे डीपी एज इट इज ऊपर से इसको यूज कर लिया. इनिशियलाइजेशन में कुछ एरर है क्या? वेक्टर वेक्टर वेक्टर. यहाँ पे 3 बार इसको क्लोज किया, फिर ब्रैकेट ओपन, फिर हमने फर्स्ट वाले का साइज स्पेसिफाई किया, देन हमने सेकंड का साइज स्पेसिफाई किया, देन थर्ड का साइज स्पेसिफाई किया. व्हाट्स द एरर हियर? नो नोन कन्वर्जन फॉर वन. लॉन्ग अनसाइंड इंट. अच्छा, इसको उसका एरर आ रहा है. ट्राई अगेन. टू रेस टू 15 लॉन्ग लॉन्ग हो जाएगा ना. What else can be the issue for this? यहाँ पे ये ठीक है, यहाँ पे ये ठीक है, एंड वी पास्ड ऑल दिस. लॉन्ग अनसाइंड इंट के लिए हमें कोई आर्ग्यूमेंट चेंज करना पड़ेगा क्या? एट लाइन 9 दिस एंड दिस. ठीक है. वेक्टर एंड स्टैंडर्ड वेक्टर जी एंड एस. Oh, we are using G twice. So we will be at group. हम एक बी लेके चल रहे. GRP एंड एस तो कुछ है ही नहीं. इट इज सम. ठीक है, तो GRP एंड सम. यहाँ पे तो कहीं हमने कुछ. सो जी एट आई. ठीक है, यहाँ पे हमने सम यूज किया है. इट हैज टू बी GRP एंड सम. ठीक है, चलो. हम्म, क्या गलत है अभी इस लॉजिक में? हमने पहले एक डीपी बनाया, उसका साइज हमने 2:15 रखा. 2:15 रखा, देन 4 रखा. and हम्म ठीक है, दिस सीम्स फाइन. हमने कोई मॉड्यूलस में भी गलती नहीं की है. मॉड्यूलस इज 10⁻⁹ + 7. ठीक है.
देन हमने यहाँ पे सब इनिशियलाइज किया एंड इफ सम बिकम्स डी तो हमें वन रिटर्न करना बिकॉज वी हैव अ करेक्ट आंसर. एंड देन इफ इट इज नॉट इक्वल टू -1 दैट मीन्स हमने वहाँ पे कुछ तो स्टोर कर रखा है. ठीक है, तो वी रिटर्न द सेम थिंग. ग्रुप सम तो हमने फिर एक आंसर इनिशियलाइज किया 0. फिर हमने सब पे आइट्रेट किया और हमने चेक किया इफ करंट ग्रुप इज इक्वल समथिंग दैट वी हैव यूज्ड. तो वी कंटिन्यू. हम्म. Otherwise, we check if this is less than equal to D, and if it is so, we use this particular index. हम पहले चेक करते हैं if इसको AND करने से हमें इक्वल 0 मिल रहा है. So 1 and हाँ इंडेक्स के लिए ये ठीक है. Then we do bit or. So also although this shouldn't matter, but okay. And then we call recursion. हाँ आंसर मॉड एम को और कुछ तो नहीं है यहाँ पे. सम हाँ एम एक ही है. ठीक है. एंड देन वी रीसेट द बिट बाय यूजिंग एक्सोर. ये भी ठीक है. एंड देन वी डू. हम हर बार ग्रुप ही ले रहे हैं ना. हम पहले बिट मास्क ले रहे हैं फिर ग्रुप ले रहे हैं फिर सम ले रहे हैं. इसको अलग से स्टोर करके लेट्स रिटर्न आंसर. ऑल्दो दैट ऑल्सो शुडंट मैटर बट लॉजिकली कुछ एरर है क्या इसमें. इज नॉट इक्वल टू -1 इनिशियलाइज नहीं कर रहे क्या ठीक से. देन वी रिटर्न द सम. Then we check for all the elements, and if the one that we have is similar to what we have used, we continue. उसको हम नहीं ले सकते. ठीक है. And then we see if we can use this ti. So plus sum करके if it is less than equal to d then we use it. Index I. हमने current index use किया है. Then b and 1 1 index. हमको कहीं रेफरेंस लेना चाहिए था क्या किसी चीज का. नहीं, जब हम सेम ही चीज पास कर रहे हैं तो रेफरेंस लेने का तो नो पॉइंट. तो बिट मास्क एंड 1 1 इंडेक्स इक्वल 0. ठीक है. Then this and this. Why am I not finding any error here? यार. So basically logically error नहीं था. If लिखते हुए it was an issue. I hope even this solution is properly clear. कोई doubts हो तो please let me know. Otherwise we can end this live session. So I don't think there are any doubts. कोई भी चारों क्वेश्चन में भी कोई डाउट हो तो प्लीज लेट मी नो. So I don't think कोई डाउट है. So we can end this live session. Thank you everyone for joining.